उनको क्या पता था क्या क्या सिनेमा बनेगा, वो पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है सिनेमेटोग्राफ एक्ट। बहुत वेग है, अगर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो एक भी फिल्म रिलीज नहीं होगी। मुझे लगता है जय संतोषी में कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगी। लेकिन now it is, for the past so many years, it is being interpreted by a whole lot of individuals and bodies. So it's based on interpretation that Ulta Punjab gets released, and then this will also eventually, inshallah, get released. It's besides the point that Mr. Nairani has taken the office of Bazaar to another level, and in full public view, and he doesn't mind it. The point is that I don't think the solution rests with that building, which used to be Varkeshwar and Samarasala. It has to go to the parliament, because that act needs to be amended by the parliament. The bad news is that the parliament is not able to look after the more important bills for this country. So I'm very depressed to think what is the future, because Cinematograph Act is not ever going to be placed at the table of the House in years to come. This is Pehla 6 months later, hopefully there will be someone else, and then someone else, and then someone else. So we'll be left to interpretations, which is the saddest part of this business. Thank you. Let me correct. Cinematograph Act के पिछवाड़े में बहुत सारी चीजें। आप वर्ड्स देखो। फॉर इंस्टेंस तो सरकार में आपसे कहा गया किशोर कुमार निकालने के लिए। कौन से एक्ट में लिखा है कि आप किशोर कुमार भी यूज कर सकते हैं? कौन से एक्ट में लिखा है कि आप सेक्शन ऑफिसर भी यूज कर सकते हैं? So this is एक फसाड क्रिएट किया है एक्ट में कहीं नहीं है। So it has been used unfortunately। ये आपका विजन फैसला है कि जो फिल्म बनेगी वो फिल्म बननी चाहिए as per the mindset of Mr. Bandookbaaz। वो तो बन नहीं सकता ना, तो possible नहीं। That is the basic issue। Rahul? I think we should book Millennium every once a month. I think ये प्रॉब्लम सेंसर बोर्ड ऑफिस से ऊपर है, क्योंकि आईएनबी मिनिस्टर आते और जाते, ये आदमी अभी भी इधर ही है, और इंडस्ट्री के लोग महेश से लेके सब लोग ने इनका प्रोटेस्ट किया है, इनके बारे में बात किया है, हर एक फिल्म के बारे में wherever he has had these stupid problems, and nothing has happened. So obviously he is following someone's order, and that needs to be addressed. Also, I think one thing which is a basic problem is the जो लोग देखते कौन है यार, who is the 4 people who see this? That needs the age group has changed now. Your dynamics have changed. You have youngsters who are watching your film. 35%, 70% of the people are youngsters, and you have 50 plus Shaka Pamuks and all kinds of others who are retired, regressive people who have the audacity to make statements like what they did with the lady, and they are still there in office, and they are the ones who are judging our films. So I think there's a lot to be done, but it should begin from the top now. Enough is enough. I have nothing to add. I agree with everybody says. जी नहीं जी अभी तक जो कहा गया है मेरे सीबीएफसी कॉलेज से जो कहा है उससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, और मैं यहाँ पर प्रशांत और सारी टीम के मेरा भी तजुर्बा ऐसा ही रहा है। आप लोगों को 2 बातें हो गई हैं। एक तो ये जो सुधीर भाई ने कहा कि डर का माहौल क्रिएट कर देते हैं फिल्म मेकर्स के और प्रोड्यूसर्स के दिमाग में कि ये लोग अपने मन की फिल्म बनाए ही ना, ये लोग वो फिल्म बनाए जो हम देखना चाहते हैं। अव्वल तो ये है, तो ये इसमें उनके एक जो सर्टिफिकेशन बोर्ड है, एक तो उनकी खुद की मानसिकता है, जो कि मानसिकता बड़ी रूढ़िवादी है, पढ़ी लिखी नहीं है, और उनके पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर हम लोगों की जान अटकी हुई है, हमारे ऊपर तलवार डाल दी गई है, और ये बहुत ही अनफेयर है, ये जस्टिस नहीं है। और फिल्म मेकर्स और फिल्म मेकिंग हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस चीज़ से। और ये बात वी बीन सेइंग इट एड नॉजियम, हम लोग इनफैक्ट काफ़ी थक गए ये कहते, लेकिन उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि थक जरूर गए होंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। अगली बार आप करोगे तो हम अगली बार फिर यहाँ आएंगे और फिर यहाँ पर अपना वक्त करके देंगे। एक तो ये बात मानसिकता की है, और दूसरा ये है जो कि हमारे जब उड़ता पंजाब का तजुर्बा हुआ था, हमने नहीं कहा था, जो कि कुशान ने बोला है
it's not just what they think, it's also how they behave with us. उनका जो पूरा आचरण है हमारे लिए वो एकदम अच्छा नहीं है. ऐसा मुझे जेन्युइनली लगता है कि मैं क्लास 7th में वो स्कूल बंक किया है, मुझे पकड़ा गया है और मैं प्रिंसिपल के सामने आया हूँ निकर पहन करके और उनसे पनिशमेंट ले रहा हूँ. इट्स लिटरली लाइक दैट. हम फिल्म मेकर से डरने की कोई जरूरत नहीं है. हम यहाँ समाज बिगाड़ने नहीं है. हमसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है. हम सिनेमा बनाने आए हैं. हमें खुद डर लगता है और वो डर चेक्स एंड बैलेंसेस हमारे सिस्टम में है. क्योंकि हमारी जब फिल्म रिलीज होगी और अगर खराब होगी तो ऑडियंस में 2 जूते मार के निकाल देंगे. तो आपको कोई जरूरत नहीं हमसे डरने की. कोई आवश्यकता नहीं है सेंसर बोर्ड की. आप एक सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाएं और उस हिसाब से हमें सर्टिफिकेट दें. और अगर अडल्ट है इसका मतलब 18 साल से ऊपर का आदमी आके देख सकता है तो उसकी मर्जी है देखना चाहे ना देखना चाहे. और देख करके ब्लॉग लिखे ट्वीट करें बहुत वाहियात फिल्म है. इससे ज्यादा आप क्या कर लोगे? बच्चे की जान लोगे. I mean, I can't speak Hindi. The thing is, I have to give a different perspective. I give a different perspective of a producer. So, based on past experiences, all of us who have decided to make a film, we invest, borrow, beg, and make that film. Now, a couple of weeks before, somebody arbitrarily stops it. Correct? And then they blackmail you to change that film because the producers don't have that. We had a press conference here. We had to fight it till the day of the release in Supreme. On the day of the release of Urta Punjab, my lawyers and I were sitting in the Supreme Court, not knowing if I have to take the film back. And my life, thank God, whenever it's been in the hands of the judiciary, it has justice has been served. But it is not a risk that everybody else can take. Because it was Phantom and Balaji, we were able to have the financial strength to even take it there. What will happen when people start losing their livelihoods, their investments, and eventually if this leads to some tragedy someday, who is going to be held responsible? Either make it very clear to us, okay boss, this is the rule of the nation. We'll understand what are the guidelines that we have to work under. Every time a new chairman comes or somebody in new government comes, if these guidelines keep going up and down, how are you supposed to make films? How are you supposed to conduct commerce? This is absolutely ridiculous. So I totally. This is very shameful whatever is happening, and I must say कि CBFC बोर्ड में जो उनकी पूरी की पूरी टीम है उसमें अगर थोड़े से सिनेमा लिटरेट लोग होंगे तो that will help. उनकी जो लोग आते हैं सिनेमा देखने के लिए, मतलब मैं तो एक ही बार वहाँ पे डेथ इन द लंच के लिए गया था, बट I was like उन लोगों ने अपने इंटरप्रिटेशन के ऊपर हमें उस क्लाइमेक्स के लिए इतनी सारी बधाई दी जो इस फिल्म का क्लाइमेक्स ही नहीं. So इसके बारे में कोको ट्राइड ऑल्सो कि नहीं, बट ये नहीं है तो we had to stop her कि मतलब कहाँ दीवार में सिर मारने वाली बात है. So it will really help कि अगर उनकी बॉडी में कुछ लोग आएंगे जो मतलब जो लोग फिल्म देखने के लिए वहाँ आए हुए हैं उनको थोड़ा सिनेमा बताएं. That would really help. ये जो गालियों की बात है, ये कभी कभी कहा जाता है कि फिल्म मेकर्स जबरदस्ती इंजेक्ट कर देते हैं जस्ट टू गेट द आइडियाज, लेकिन ये ऐसा है नहीं. हिंदुस्तान में आप सब जानते हैं कि हर 2 मिनट में हम लोग गाली देते हैं, पर मिनट गाली होती है. तो इसको इतना बड़ा इशू क्यों रह जाता है? नेवर अंडरस्टूड. मैं 5th क्लास में था, नॉट एग्जैजरेटिंग द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ फादर एंड सन. पंजाबी फैमिली थी दिल्ली में. वो 5th में था लड़का और वो शेव करता था. ओनली गाय यूज्ड टू शेव इन क्लास 5. तो बाप आता है, कहता है ओए रमन, भाई शेव क्यों नहीं बनाई तूने? She turns around and says, तो भाई बनाई तो दिया था. मैं गिर पड़ा था कि ये फादर सन की कॉन्वर्सेशन थी. But there was no harm meant to either the father or the son. So
what I'm trying to say is sometimes it's unnecessarily attributed to filmmakers that they're trying to, get the eyeballs and get attention to, put in these kind of words. It is to create a certain kind of atmosphere. बहुत सालों तक हमने जो clean सी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फिल्म में नहीं होनी चाहिए जिसमें आप और जनाब होना चाहिए. वो भी फिल्में बनती हैं, वो भी बननी चाहिए. But if somebody wants to make a film of his liking and he wants to set in a particular place, we all know, I think Green was it best when Shekhar made Bandit Queen. And what happened to that film? Because पहली बार माँ और बहन सुनाई दे रहा था. So I think time has really changed. We need to grow up and stop lecturing us on these